I will read 26th verse of the 3rd chapter of 27th verse of the 3rd chapter of Bhagavad Gita, entitled Karma Yoga. Prakrite kriyamanani gunaihi karmani sarvashaha ahankara vimudhatma karta aham iti manyate prakriti kriyamanani gunaih karmani sarvashaha ahankara vimudhatma kartaham iti manyate prakriti kriyamanani gunaih karmani sarvashaha ahankara vimudhatma kartaham iti manyate prakritika kriyamanani किया जाकार गुनाही गुणों के द्वारा कर्मानि कर्मा सर्वशः सभी प्रकार के अहंकार विमूढ़ अहंकार से मोहित आत्मा आत्मा कर्ता करने वाला अहम मैं हूँ इति इस प्रकार मन्यते सोचता है Very good, Maharaj. How did you learn, Maharaj? जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मन बोध का है मन बैठा है जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं तात्पर्य क्षमा कीजिए आपको क्षमा कीजिए आप कितने अच्छी हिंदी हम नहीं समझ पाए दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भवन भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं किंतु उनके पदों में आकाश anyway maybe I should read in English आकाश पाताल का अंतर रहता है भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण अस्वस्थ रहता है कि वही सभी वस्तुओं का करता है
वह यह नहीं जानता कि शरीर का रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर के अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंततो गत्वा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करते का श्रेय लेना चाहता है और यही है उनके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञाता नहीं कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भवनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होना चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाती है, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी है। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वे अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। ठीक है। Anyway, I'll speak in English. Namo Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Can you read the translation once again? Yeah. Oh, okay. ये जो श्लोक था 30वें अध्याय के 27वां नंबर श्लोक है। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। So, हम लोग मोहग्रस्त हैं। इसलिए हमारे जीवन बहुत मुश्किल है। मैं हिंदी में प्रयास बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा हिंदी का ज्ञान बहुत कम है, इसलिए मैं अंग्रेजी
आसानी से बोलने वाला हूँ. It's a little difficult to switch off. Hare Krishna. I'm very happy to be with you here this evening. महाराज बहुत प्रसन्न है यहाँ आकर इस शाम हमारे बीच. Today I will speak a little bit on this verse which is dealing with the most important problem which we all have. इस श्लोक के विषय में कुछ महाराज को दर्शन देना चाहेंगे जो कि ये समस्या सबके साथ है. श्लोक को समझने की. The main problem which we all have is ahankara. ये जो समस्या अहंकार के साथ सबके पास है. अहंकार मतलब false ego. अहंकार का मतलब मिथ्या अहंकार. Mithya ahankara. Or false conception of what we are and what we are supposed to do in this life. एक मिथ्या विचार कि हम कौन हैं और हमारा कर्तव्य क्या है. In Bhagavad Gita, Krishna, starting from the 3rd chapter, explains the reality. वास्तविकता क्या है कृष्ण हमको 3रे अध्याय से बताना शुरू करते हैं. In the 2nd chapter, he gave a very not very systematic description of the spiritual science, but starting from the 3rd chapter, he starts going very systematically. तो 2रे अध्याय में बहुत ज़्यादा व्यवस्थित हिसाब से ज्ञान नहीं देते हैं, संक्षेप में बता रहे हैं, लेकिन 3रे अध्याय से वो बिल्कुल विवरण करते हैं और सिस्टमैटिक वे से. And he starts with the most important aspect of our life, which is activity, karma. और उनकी शुरुआत होती है कर्म से जो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है. Ultimately, he wants us to bring to very elevated states of consciousness, and he will speak about this in the later chapters, like in 9th chapter, about love of God. तो आखिर में हमको वो बहुत ही ऊंची चेतना में ले जाना चाहते हैं जो कि 9वें अध्याय से वो शुरू करेंगे बताना. But the starting point of any spiritual life is this: what we are doing every day in our life. तो सबके लिए जो शुरुआत है वो कि हम डेली क्या कर रहे हैं उस विषय में समझें. And unless we understand how to deal with our problems on a daily basis and what we do while we live in ordinary life, unless we do it properly, there is no question of more elevated states of consciousness. तो हमारी दिनचर्या में हम जो कुछ कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, अगर उसको ठीक से समझ के कैसे करना चाहिए, अगर ये न सीख लें तो आगे बढ़ना कठिन है. Very often, unfortunately, especially in the West, when people hear this very lofty, elevated philosophy of Krishna consciousness, they try to jump there by bypassing normal dealings and the proper rules of conduct. तो खास करके पाश्चात्य देशों में देखा गया है जब ऊंचे विचारों वाली बात सुनते हैं तो लोग स्टार्टिंग की जो बेसिक जो फाउंडेशन हमारी नींव उसको छोड़ करके आगे बढ़ के ज़्यादा कुछ समझने की चेष्टा करते हैं. But ultimately it doesn't work because you have to go gradually, step by step. अगर ऐसे काम नहीं बनता है हमारा, हमको एक धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमको सीढ़ियों में जैसे चढ़ता है वैसे हमको चढ़ना है. And we should start in understanding what should be our consciousness when we act in this life. हमारी चेतना क्या होनी चाहिए कर्म करते समय ये जानना आवश्यक है. Sometimes people, when they are disgusted with their activities, with karma, with the problems which they accumulated due to their karma, they try to avoid activities and they go somewhere in Himalayas and try to adopt inaction, so to speak. तो कुछ ज्ञानी लोग ऐसे जो अपने कार्यों के कर्म के फलों से परेशान हो करके वो कर्म को ही बंद करना चाहते हैं और
एक वैराग्य के कहीं दूर जाकर के कर्म को बंद करना चाहते हैं, तथाकथित। We all know that when we do karma, it's very difficult. The stress accumulates and we acquire a lot of mental problems and we're tired. So naturally, sometimes people after working hard, they go into another extreme and they try to avoid any work. तो कर्म करने से बहुत सी परेशानी होती है, स्ट्रेस होती है, थकान होती है। तो कुछ लोग इससे बचने के लिए भी सब कार्य करने के बाद थक करके वो दूसरी ओर जाना चाहते हैं जहाँ कर्म न करना पड़े। And it's often times the case that people are artificially trying to solve their problems. First they accumulate problems by working, then they try to solve these problems by not working. पहले कर्म करके समस्या बढ़ाते हैं और फिर कर्म बंद करके समस्या घटाना चाहते हैं। ये समस्या है। But what Krishna wants to explain to us is that you can work and you should work. You will not be able to avoid working, but you should work in the proper consciousness. तो कृष्ण क्या बताते हैं, आप कर्म करते रहेंगे, अब कर्म के बिना नहीं रह सकते, मगर कैसे कर्म करना है सही ढंग से वो सीखना चाहिए। So he starts this third chapter of Bhagavad Gita from a very simple statement. Arjuna asked, Arjuna was confused after second chapter, and Arjuna said, Krishna, you are glorifying Buddhi Yoga, and Buddhi Yoga means intelligence, and intelligence means, we all know, intelligent people don't work. So Arjuna is starting from this confused state of consciousness. He says, you want me to do Buddhi Yoga, and why do you want me to engage in this war? Because war is not Buddhi Yoga, according to him. तो अर्जुन की शुरुआत भी एक प्रश्न से होती है इस 30वें अध्याय में। वो समझते हैं कि बुद्धि योग जो है, जो बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि से कार्य करते हैं, वो कर्म नहीं करते। तो अगर आप उनको बुद्धि योग में लगाना चाहते हो, कर्म क्यों करें? उनका भी तर्क ये था। So he asked this question, tell me very clearly what is better, not to act or to act, to be engaged in action. तो इसलिए उन्होंने बोला, आप हमें स्पष्ट बताइए कि कर्म करना अच्छा है कि कर्म नहीं करना अच्छा है। And Krishna gives a very interesting answer to this question. और कृष्ण बहुत ही अच्छा सुंदर उनको उत्तर समझाते हैं। He says you can do this way or that way. आप इस तरह से भी कर सकते हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं। But ultimately you have to reach the level of nishtha, which means stability. आप इधर से करो या उधर करो, लेकिन आखिरकार आपको स्टेबिलिटी मानेगी, निष्ठा तक पहुंचना है। He says it doesn't matter which way you go, but you only can consider yourself successful if you reach this state where you are completely stable in mind. आपका मन अगर स्थिर हो जाता है कार्य करते हुए, तो वो आपकी सिद्धि है, सफलता है। सफलता है। Actually, I understand everything which he says, but unfortunately, I cannot speak the same thing. I could have said the same thing myself, but Why don't you? Okay. मेरे पास अभ्यास नहीं है, यह समस्या है। ये अभ्यास ही होगा ना आपका। लेकिन ये मेरे लिए ये अभ्यास है, लेकिन आपके लिए ये परेशानी है। हमारे लिए आनंद है, स्पष्ट speak in English and Hindi. Sentence by sentence. Okay. राशन लोग यहाँ ही भी है, उनके लिए मैं अंग्रेजी बोलूँगा। Some Russians are sitting here, the Maharaja is speaking. So Krishna makes this very interesting point that ultimately the success which we acquire in our activity is should be judged according to the stability of our mental
constitution of our mind, basically. तो हमारे कर्मों की सिद्धि को, सफलता को हम अपने मानसिक स्थिरता से माप कर सकते हैं कि हम कर रहे हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए. We all know that during the course of our activities we become more and more disturbed mentally. और सबको मालूम है कि हम जब कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा विचलित रहते हैं, विचलता बढ़ती जाती है. Everyone is completely disturbed in mind. सब लोग अपने मन से अशांत रहते हैं. It is called stress. उसको तनाव बोलते हैं. And I read one yogi, and this yogi, he made a very beautiful statement. He said, sometimes people say that stress is something which is only recent, modern, some feature of the modern culture. एक योगी की पुस्तक महाराज पढ़ रहे थे, वो समझा रहा था कि स्ट्रेस लोग समझते हैं कि आधुनिक दुनिया में ये एक नया शब्द बनाया गया है. I want to speak in Hindi. But in reality, he said, stress was always there, but before it was called ignorance. Now it's called stress. तो ये तनाव पहले भी था, जो आज है, लेकिन पहले इसको अज्ञान करके हम बोलते थे. अविद्या बोलते हैं, और आज हम उसको तनाव या स्ट्रेस बोलते हैं. Actually, when we are in ignorance, then whatever we do will make disturbance in our mind, and will create stress in our mind and in our heart. तो जब हम अविद्या या ज्ञान में रहते हैं, हम जो कुछ भी करेंगे, उससे तनाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा. There is a little joke which I like to tell in this regard. एक छोटा सा चुटकुला महाराज इस विषय में बताना चाहेंगे. One old man, he put an ad in a newspaper. Then I want to employ one young, energetic man. एक बूढ़े व्यक्ति ने विज्ञापन दिया था कि मैं किसी नौजवान को एम्प्लॉयमेंट कार्य देना चाहता हूँ. And one unemployed young person came and said, "Yeah, I'm ready to work for you. What do you want me to do?" एक बेरोजगार नौजवान था, वो आया और बताइए मेरे को क्या करना है. And the old man said, "You know, I always worry, so your only job will be to worry instead of me. I will do my work and you will worry." मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ, तो तुम्हारा कार्य ये होगी, मेरी चिंता है तुम उठा लो, तुम चिंता करते रहो, मैं फ्री रहूँगा. And the young man said, "Yeah, that's fine. I can do it very well. It's no problem." तो युवक ने कहा, हाँ, मैं आपका ये कार्य बहुत अच्छी तरह कर सकता हूँ. He said, "Okay, what will be my salary?" He said, "Yeah, $1,000 per month your salary will be." He said, "Yeah, very good." तो आपकी तनख्वाह वेतन क्या होगा? $1,000 आपको महीने मिलेगी. ठीक है, बहुत अच्छा है. So when can I get my money? This young man asked. When can I get my money? तो ये पगार मेरे को कब मिलेगी बताओ. He said, "That will be your first worry." वो भी एक चिंता है. Because I don't know where to get money for you. मुझे ये नहीं मालूम तुमको पैसा देने के लिए मैं कहाँ से लाऊं. ये भी चिंता है. The point is that we always worry. We always हमेशा चिंता रहते हैं. हाँ, तो बिंदु ये है कि हम हमेशा चिंतित रहते हैं. महाराज ने जैसे अनुवाद. But Krishna explains that this is ignorance. This is actually the wrong attitude. Why we are worried? Because something is wrong in our understanding. कृष्णा बहुत अच्छी तरह समझाते हैं कि ये अविद्या अज्ञान है. हम क्यों चिंतित रहते हैं? क्योंकि हम अज्ञान में हैं. And ultimately, in this particular verse, he explains the reason why we're always worried and why all the problems which we create are coming to us, and the reason why we create karma during the course of our work. इस श्लोक में समझाते हैं कि हम कैसे कार्य करके उसमें फंसते जाते हैं, कैसे हम चिंतित रहते हैं. So he specifically says, ahankara vimudhatma kartaham iti manyate.
वो विशेषकर इस बात पे जोर देते हैं कि अहंकार भी मूढ़ात्मक करता हम। He points out this problem that this consciousness that I'm working and everything depends on me is the cause of all the problems. तो इस बिंदु पे वो जोर देते इस पॉइंट पे कि मैं कर रहा हूँ और सब कुछ मेरे पर निर्भर है, क्या यही कारण है हमारी चिंता का। This sort of consciousness that everything depends on me and I have to work and I have to really, and everything and all the results depends on me is the problem, is the real problem which is there. ये जो चेतना है कि भाई मेरे को कर्म करना है, सब कुछ मेरे पे निर्भर है, मैं नहीं करूँगा तो कुछ नहीं होगा, यही समस्याओं का कारण है। Krishna explains that actually Prakriteh Kriyamanani, that there is a lot of work which is being done by Prakriti, by the natural arrangement of the Lord. And ultimately this whole material creation is working under the Lord. Krishna himself says, Maya Dyakshana Prakriti Suyate Sacharacharam. Everything is working, this Prakriti is working under my supervision. Maya Dyakshana Prakriti. ये सारी प्रकृति जितना भी कार्य हो रहे हैं कार्यकलाप वो मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य कर रही है। And if we understand that Bhagavan is behind everything which is going on, then our relationship and our reaction to what is happening will be completely different. अगर ये बात को समझ में आ जाए कि सब भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है तो हमारा उनके साथ संबंध जो है वो बदल जाएगा और हमारे कार्य करने की चेतना है वो भी बदल जाएगी। Ultimately, this understanding should be there that Krishna is in charge and I am just doing whatever I can do without bringing too much importance to our own role in it. सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं और मेरे को जो दिया गया मेरे जो वही मैं करूँगा और उससे ज़्यादा हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। This detached attitude is extremely important for detached attitude is very important for us even to do our duties properly. ये जो विरक्ति वाला भाव हमारे जो कर्तव्य का पालन करते हैं उसमें विरक्ति वाला भाव आना बहुत जरूरी है। There is another little story or joke about this. There is a little story about this. तो एक छोटी सी कथा और बताएंगे, कहानी बताएंगे महाराज। Just imagine that somebody is going by the train. अब विचार कीजिए कोई ट्रेन में सफर कर रहा है, यात्रा कर रहा है। And he has a lot of luggage with him. और बहुत सा बोझ उसके पास है, सामान है। And he puts this luggage on his head. और वो सामान अपने सर के ऊपर ट्रेन के अंदर बैठा है। And he's really suffering there on this luggage. और वो पूरी तरह से परेशान है सामान उठा के। And somebody asks, why are you doing this? Why don't you put luggage somewhere here? कोई उससे पूछता भी ऐसा क्यों कर रहे हो, अपना सामान नीचे रखो। And he says, because I want to help the train to go. तो कहता है कि मैं ट्रेन की मदद कर रहा हूँ, सहायता कर रहा हूँ कि ट्रेन चले। It's very difficult for the train to go. But in reality, it's the train. Train is taking you, and you have to, you shouldn't be the sufferer in this world. वास्तविकता ये है कि सामान भी आपके साथ ट्रेन उठा के लेके जा रही है, लेकिन आप इस तरह के विचार करके अपने आप को परेशान कर रहे हैं। In Mahabharata, there is this beautiful chapter, Yaksha Prashna, where Maharaja Yudhisthira speaks with Yaksha. यक्षों का प्रश्न युधिष्ठिर से पूछा गया, ये महाभारत में एक अच्छा प्रसंग है। And there Yaksha asks one question, many questions, but among many questions he asks one question, what is the pride? What is the meaning of pride? Who is proud? तो बहुत से प्रश्न यक्ष ने पूछे थे, उसमें से एक प्रश्न ये था कि अहंकार क्या है? घमंड।
and Gamandiya. And Maharaja Yudhisthira gives a beautiful answer. He says that pride is either the concept that I'm the hero, I'm the winner, I'm the best, or the concept I'm the sufferer and I'm the victim. And the cause. No. I'm the hero. I'm the hero or I'm the victim. Okay. Either or. It's two sides of one coin. It's the same. You can be proud because you are the great, or you can be proud because you are victim. युधिष्ठिर ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि मैं करता हूँ, मैं हीरो हूँ, क्या सब कुछ मेरे नायक, या मैं नायक हूँ, या एक्टर हूँ, या मैं भोगता हूँ, मैं भोग रहा हूँ, सफर कर रहा हूँ, like that? So this all pride, this all ahankara. Yeah. Either we want to win and be winner, and then if it doesn't work, we start suffering. But in reality, we are none. तो हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, क्या? और जब विजय नहीं मिलती है तो हम हार मान लेते हैं, तो और हम सफर करते हैं, परेशान होते हैं, पर दोनों भी बातें अहंकार हैं. Yeah. Because in reality, if we're a little detached and if we consider us as a servant of Krishna and everything is happening because of his will, we are neither hero nor victim. We are servant of Krishna in all circumstances. अगर हम विरक्त भाव से कार्य करें कि मैं करने वाला नहीं हूँ और मैं भोगता नहीं हूँ, तो ये सही चलना. Krishna is trying to explain what sort of consciousness, what sort of understanding you should have, so that while acting you would not be disturbed, you would remain stable in your mind, and you would not create this sort of mental disturbance, and ultimately would not create karma in your mind. तो कृष्ण यही समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि जब आप कर्म कर रहे हो कि आप विरक्त भाव से करोगे तो आप परेशान नहीं होगे, ना ही कर्मों का फल आपके हिस्से में आएगा. He said you should just understand that there is prakriti and you should follow certain rules and you should do it in a very detached way without being attached to the fruits of your action. तो ये प्रकृति है, इसके कुछ यम नियम है, उसके अनुसार आपको कार्य करना है, विरक्त होकर के. And ultimately he says that the main problem which we have is this attachment to my conception, because from ahankar, from me, from I, conception of I comes conception of mine, or the fruits of my action belong to me. तो ये जो चेतना है, मैं करता हूँ, तो इससे एक और विचार मन में आता है कि इसका फल भी मेरा है, मैं इसका भोगता हूँ. It's always together, aham and mama. If I have this aham, then I will have something which I think is mine, and from this all the problems comes. तो अहम से मम आएगा. अगर मैं अपने आप को अहम करता मान बैठता हूँ, तो जो फल हमको मिलेगा उसका भी मैं मालिक बनना चाहूँ, अपना समझना चाहूँ. Ultimately, because we have this wrong understanding of who I am, aham, then because of this we have the wrong understanding of what is mine. और क्योंकि ये विचार गलत विचार हमारे मन में है कि मैं कौन हूँ, अपना परिचय हमें मालूम नहीं है, तो इसके लिए हमारे अंदर ये दूसरा विचार आता है कि ये सब कुछ मेरा है. Yeah, and this conception or this understanding that this belongs to me is a cause of constant suffering and all the problems which we have in this world. ये जो ममता है कि ये सब कुछ मेरा है, ये सबसे बड़ा कारण है हमारी समस्याओं का. Ultimately, nothing belongs to us. अंदर तो गत्वा ये कुछ भी हमारा है नहीं. It's just a conception in our mind. ये एक भूल धारणा हमारे मन में. You have this conception that this belongs to me, but ultimately you will have to leave everything behind. हम
सोचते हैं गलत विचार कि ये सब कुछ मेरा है, लेकिन आखिर में सब कुछ छोड़ के जाना है। There is this famous story that when Alexander the Great was dying, he asked that when he would be dead, to put his hands like this in a coffin. तो सिकंदर जो बादशाह था, वो जब मरने के दिन अंतिम दिन आ गए थे, उन्होंने बोला था जब मेरी शैया उठेगी, मेरा जनाजा निकलेगा, तो दोनों हाथ हमारे बाहर होंगे हमारी अर्थी से। Usually when people are dead, they put hands like this on their chest. किसी भी मृत शरीर को जब उठाया जाता, हाथ को ऐसे बांध कर रखा जाता, लेकिन उसने कहा था बाहर। But he specifically asked, please put my hands like this. लेकिन उन्होंने खास करके ये सबको आदेश दिया था कि मेरे हाथ दोनों बाहर की तरफ। And when his generals asked, Your Majesty, why do you want your hands like this? तो उनके जो मंत्रीगण उन्होंने पूछा उनसे भी, आप ऐसा क्यों अपने हाथों को बाहर रख के जाना चाहते हैं? He said, because everyone should see that I'm going there with my empty hands. उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ सब लोग ये देखें कि मैं जब जा रहा हूँ तो मेरे हाथ खाली हैं। That I couldn't take anything with me. मैं अपने हाथों में अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता। There are so many stories in this regard, but this is what we have to really clearly understand. If we are very clear who I am, that I am spirit soul and I belong to Krishna, then my conception of what belongs to me will also be proper and will not cause the problems to me. तो अगर हमें ये ज्ञात हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, तो हम हर वस्तु के साथ ये संबंध हम बनाएंगे कि कुछ भी मेरा नहीं है, और इससे हमारी कोई समस्या बनेगी नहीं। I will just take care of what Krishna gave to me temporary, and I will very honestly and conscientiously deal with it, but I will not be too much in anxiety about what is next to me. जो कुछ मेरी कोटा में कृष्णा ने मुझे दिया है, मैं उसका प्रयोग करूंगा बिना आसक्ति के। Just like a clerk in a bank. If clerk in a bank will imagine in his mind that all this money which goes through his hands belong to him, he will have a lot of problems. जैसे कोई बैंक का खजांची है, वो सारा दिन रोकड़ा गिन रहा है, अगर जिस दिन वो समझ ले कि सब कुछ मेरा है, तो परेशानी उसके सर पे आ जाएगी। But if he deal with it in a diligent way as a clerk is supposed to deal, then there's no problem. He has a happy life. पर अगर वही खजांची अगर अपना कार्य करे कि ये मेरा नहीं है, मैं अच्छी तरह से अपना कार्य निभाऊं, अपने पालन करूं, तो कोई परेशानी उसको नहीं। In the same way, Krishna, God, is giving to us something to take care of. उसी प्रकार कृष्ण भी हमको कुछ देते हैं ताकि हम उसकी देख-रेख कर सकें। But the moment we start thinking that belongs to me, the problem comes. जैसे ही हम सोचते हैं कि जो देख-रेख के लिए हमको दिया गया वो मेरा है, तो ये समस्या शुरू होती है। But if we think, yeah, this belongs to Krishna and I'm taking care of it, Krishna may give us more. लेकिन आप सोचे कि जो कुछ भी मेरे को दिया ये कृष्ण का ही है, मैं खाली उनकी देखभाल करने के लिए हूँ, तो कृष्ण और भी देंगे। If the clerk in a bank is very trustworthy and he doesn't think that this belongs to him, then he will be promoted. उसी प्रकार से बैंक का कार्यकर्ता अगर वो ईमानदारी से सब काम ठीक से करे, तो उसको जल्दी उन्नति तरक्की मिलेगी। But if he starts thinking or doing some funny things, he will be degraded. He will just lose his position. And ultimately that's what Krishna is trying to explain to us, how we should work and how we should go about work, understanding that ultimately this doesn't belong to me. Therefore he says, then when you have ahankara, it's something like he says, ahankara vimudatma prakriteh kriyamanani
what is it? Gunai karmani sarvashaha ahankara vimudmata kartaha mati manyate. He gives a very interesting phrase in Sanskrit, ahankara vimudha atma, completely bewildered, mohagrasta atma or jiva. अहंकार विमूढ़ आत्मा विशेष तरह उसको हमको बता रहे हैं कि हम अहंकार में पूरी तरह से विमूढ़ हो गए हैं. And vimuda or mohagrasta means that it's something like under the drug. That ahankar or false ego is something like a drug. Like a Drug. नशा. और ये एक नशा है. कि ये सब कुछ मेरा है. One becomes mad, one becomes completely intoxicated by this understanding. This is all mine. वो बिल्कुल मत हो जाता है, पागल हो जाता है. And what drug makes with our consciousness? Drug distorts our consciousness. Drug kind of changes our consciousness, and then we see differently. जो ड्रग क्या कार्य करता है, जो हमारी चेतना को बदल देता है और हम सबको गलत दृष्टि से देखते हैं. So in the same way, all these ahankaric people who have big ego, their worldview is completely distorted. They are not really seeing the reality. They see it in a completely distorted way. तो असलियत और वास्तविकता क्या है, ये अहंकार में विमूढ़ होने के कारण वो देख नहीं पाता यथार्थ रूप में सब. And the most important thing is that we all have ahankar. Somebody has big ahankar, somebody has small ahankar. सबके पास अहंकार है, किसी के पास बहुत ज़्यादा बड़ा अहंकार है, किसी के पास छोटा अहंकार है. Those who have small ahankar, they have small cars. Those who have big ahankars, they need big cars. छोटे अहंकार वाले की छोटी गाड़ी, बड़े अहंकार वाले की बड़ी गाड़ी. Those who have small ahankars, they need small apartment. Those who have big ahankar, they need big house. It's so that the ahankar would fit in the big house. Otherwise, it's. But ultimately, we all have ahankar. And what Krishna says here is that when we see the world, we see it through the glasses of our ahankar. अहंकार है सबके अंदर और हम जो दुनिया को देखते हैं उस अहंकार का चश्मा पहन के देखते हैं. We don't see the reality. We see only through the level of through the conception of our ahankar, of our false ego. तो हम इस दुनिया की वास्तविकता को यथार्थ रूप में न देख करके हमारे अहंकार का चश्मा पर्दा लगा करके हम देखते हैं. That's why everyone sees the world differently. इसीलिए हर व्यक्ति इस दुनिया को अलग दृष्टि से देखता है. Sometimes two people, they see the same thing and they see completely different picture, although they see the same thing which is happening outside of them. तो एक ही वस्तु को दो व्यक्ति जब देखते हैं तो उनको अलग-अलग दिखता है. And then they start quarreling. One says this is like this, another says this is like this. और फिर वो बहस करते हैं. एक बोलता है ये ऐसा है, दूसरा बोलता नहीं वो वैसा है. Ultimately, why there is so much quarrel? Because of ahankar in this world. Because everyone sees differently, everyone has different opinion because of this. तो ये झगड़े किस लिए हैं? अहंकार के कारण ही सब लोग अलग-अलग दृष्टि से देखते हैं तो आपस में लड़ते हैं. And what is the most important, and this is also connected with this chapter of Bhagavad Gita, is that ahankar gives us different perception of the world, of what is happening, and then ahankar, because of this ahankar, it creates certain emotions in our mind. I will explain it now. अहंकार से सब कुछ हमको गलत दिखता है, गलत हम समझते हैं और अंदर में भी हमारे भाव जो है बदलते रहते हैं. Like for example, we can have 2 or 3 people and they see, let's say, the same movie. उदाहरण के तौर पे 2-3 व्यक्ति हैं और एक ही चलचित्र को देख रहे हैं. Somebody will be crying, another one will be completely unmoved, and the third one may be laughing at the same scene. तो एक देख करके रो रहा है, दूसरा शांति से देख रहा है, तीसरा हो सकता है देख के हंस रहा हो. They see the same thing, but they experience different emotions. एक ही चीज को देख रहे हैं वो तीनों लोग
लेकिन उनका अनुभव अलग अलग है, उनके भाव अलग अलग हैं। Why? Because they see it through this media or through this filter of their false ego. ऐसा क्यों है? क्योंकि वो अपने मिथ्या अहंकार के फिल्टर से देख रहे हैं। They see something happening, and then there is a very complicated process which is going on in the mind. But before this process starts, they sort of appropriate what is there according to the level of their ego. देख रहे हैं कुछ और वो छलनी के माध्यम से उसको दिख रहा है कुछ और अंदर से उसके विचार चलते रहते हैं। फिर ये अंदर एक बहुत जटिल विचार उनका चलता रहता है, उससे वो निर्णय लेता है। Another example we can give that, you go in the street and you see a shop. दूसरा उदाहरण, रास्ते में जा रहे हैं, किसी दुकान को आपने देखा। And if there are different people, they will only see different things which somehow or other related to them, to their conception of who they are. अलग-अलग लोग देखेंगे उसको, अलग-अलग वस्तुओं को देखेंगे अपने संबंध के हिसाब से, वो जैसे हैं वही चीज वो देखेगा। If this is somebody in a woman's body, then she will see all these dresses which are there, and the man will not even see the dress which is there, will not even notice what is there. कोई स्त्री देखेगी तो वो श्रृंगार का और अपने वस्त्रों का, महिला के वस्त्रों को देखेगी, लेकिन कोई पुरुष जाएगा तो उसके तरफ ध्यान भी नहीं देगा। But if he sees some new gadget, he will immediately notice, this is a new gadget, I have to have it. लेकिन और कोई यंत्र वहाँ देख लेता है तो पुरुष सोचेगा मेरे को ये चाहिए। The different people, in other words, different things, different events of this world will create different emotions or different reactions in different people. What I want to say. दुनिया की अलग-अलग वस्तुएं, अलग-अलग लोगों को अलग-अलग दिखती है, अलग-अलग भाव और अनुभव। But if we have this strong ahankara, then when we see something and if it's somehow or other in our mind is related to who I am, then we will create, there will be a very strong feeling or desire, I want to have it. This is mine, I want to have this. तो हम देखते-देखते जब अपना मिथ्या परिचय हम जानते हैं तो उसके हिसाब से हम उसको प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, विचार करते हैं। And this is exactly what Krishna says later. He says this desire, come, this very strong desire, very strong emotion, very strong energy is a big problem of a human being. कृष्ण ये समझाते हैं कि ये जो मिथ्या अहंकार, जो इच्छा हम प्रकट करते हैं, ये बहुत बड़ी शक्ति है, ये सबसे बड़ी समस्या है। And this desire or come, lust, is only coming because of ego, or false ego. ये काम, ये वासना, ये इच्छाएं, ये केवल हमारे मिथ्या अहंकार के कारण। All the problems which we create by our wrong actions is because of this काम, of this lust. I want. जो भी कार्य करके समस्या खड़ी करते हैं, इस काम और इस वासना के कारण, ये मेरे को चाहिए, ये प्राप्त करने की कामना। But ultimately, this desire, this lust, is because of this false ego which is there. We have to understand. लेकिन अगर देखा जाए कि ये जो काम है, ये जो वासना है, हमारे मिथ्या अहंकार के कारण है। Arjuna asked this question, Krishna, what is this force which forces me to do something wrongly, even though I know that this is wrong and I shouldn't do, but still I do, and I cannot resist of not doing it. अर्जुन ने भी ऐसे प्रश्न पूछा कि ऐसी कौन सी ताकत है क्या जो न चाहते हुए को पाप करने के लिए बाध्य करती है। And Krishna says, Kama esha krodha esha raja guna samudbhavam. This is kama which turns into krodha, into anger. This is lust which turns into anger. कृष्ण को समझाते हैं कि काम ऐसे क्रोध है, ये जो काम है, फिर इससे ये क्रोध उत्पन्न होता है, इसके कारण ही हम गलत काम करते हैं। But what I want to say is that beyond kama and krodha, there is ahankara. There is false ego. महाराज कहना चाहिए काम और क्रोध से बढ़कर एक हमारे अंदर मिथ्या अहंकार है।
Sometimes people ask, especially devotees ask, how can I get rid of this karma? I feel this lust, I just want to enjoy. And can you give me some understanding how to get rid of it? कभी-कभी भक्त लोग भी आके महाराज से पूछते हैं, ये काम वासना से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? आप कोई उपाय बताइए। But ultimately, the answer to this question is that you will never be able to get rid of lust and anger and greed and all other problems which we have unless you get rid of your false ahankara, false ego. तो इसका उत्तर यही है कि आप कभी भी काम, क्रोध, लोभ से मुक्त नहीं हो सकते जब तक आप अपने मिथ्या अहंकार को सुधार नहीं लेते। Krishna says that this is the biggest enemy which we have. We have 6 enemies within our heart. ये सबसे बड़ा दुश्मन है, हमारे अंदर 6 दुश्मन हैं, शत्रु। 6 शत्रु, 6 दुश्मन जो हमारे दिल में है, रहते हैं, हमेशा रहते हैं। लेकिन हम इस दुश्मन को छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास इस मिथ्या अहंकार है। Мы не сможем избавиться от этих врагов, от этих душманов в нашем сердце, если у нас есть ложное эго. अगले बार। So that's the point of this verse. That behind all the problems which we have, the root cause of all the problems which we have is the false understanding of who I am. False understanding of who I am. श्लोक का केंद्र बिंदु यही है कि भाई हम जो भी समस्याएं हम देख रहे हैं क्या, वो सबसे मूल कारण जो है वो है कि हम अपना परिचय नहीं जानते। And we will never be able to solve all our problems unless we solve this root cause problem, this main problem that is false understanding of who I am. तो हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता जब तक कि ये मूल समस्या जो है, मूल कारण को हम ना ठीक कर दें कि ये मिथ्या अहंकार क्या है। And therefore this understanding which Prabhupada gives to us that I am not this body, मैं शरीर, मैं इस भौतिक शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। So unless we have this understanding very clearly established in our mind, in our heart, we will not be able to solve our problems, and we will always create some mistakes and we create some stress. तो जब तक अच्छी तरह से पूरी तरह से हम अपने अहंकार को समझ नहीं लेते कि हमारा परिचय क्या है, तब तक हमारी दुनिया के हमारे इस दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम हैं, समस्याएं हैं, हम कभी उनका समाधान नहीं कर सकेंगे। And if we have the proper understanding, then the complete outlook of this world and complete understanding of this world will be different, and the result will be different, result of our work. जब हम इस ज्ञान में स्थित हो जाएंगे, जब हमको पूरी समझ में आ जाएगा, तो हमारे कर्मों का जो फल है वो अलग होगा। As I said in the beginning, why modern people have so much stress? तो आजकल आधुनिक लोगों को इतने ज़्यादा तनाव क्यों होता है? Because they have so much ahankara. क्योंकि उनका अहंकार बहुत बड़ा है। You can do the same sort of work, even better. You can do it better without any stress. You will still be very happy and not tired. वही काम बिना तनाव के अब इससे भी बड़ा काम कर सकते हैं। It's a very simple test. If you do some work at the end of the day, you're completely tired and you're completely, you don't know what to do and you're just distressed and there is a lot of anxiety in your mind. It means that you did it wrongly. It means that you did it with ahankara. अगर आप पूरा दिन काम करके, मेहनत करके, परिश्रम करके आप डिस्टर्ब रहते हैं, विचलित रहते हैं, चिंतित रहते हैं, इसका मतलब आपने कार्य गलत किया।
It means that you were driving in a train, but still you were carrying this load in your head. इसका मतलब आप ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, लेकिन अपना सामान का बोझ अपने सर पे रख के यात्रा कर रहे थे. Otherwise, why should you be tired? It's no problem. Train is going. Be happy. ऐसा नहीं तो आप इतने थक क्यों जाते हैं? ये तो चल रही है. It's a completely different mode of action. Completely different mode of action. ये बिल्कुल कार्य करने की प्रणाली अलग है. Even on a physiological level, you will be different. You will be very relaxed and very happy. ये शारीरिक रूप से भी आपको कोई थकान नहीं होगी. There is a very nice story from the life of Srila Prabhupada, which is one of my favorite ones. तो एक बहुत श्रील प्रभुपाद की जीवनी से एक बहुत सी कथा है. At one point, there was very difficult time in ISKCON. Of course, I don't know any time in ISKCON which would not be difficult, but at that time it was very difficult. तो ISKCON में जब श्रील प्रभुपाद थे तो एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी. You know, this huge worldwide movement, and Srila Prabhupada alone, he is the head, and problem is in Mumbai, problem is in America, problem is in Germany, you know, and all these problems are coming to Srila Prabhupada. प्रभुपाद एक अकेले और समस्याएं हर तरफ से, अमेरिका से, जर्मनी से, मुंबई से उनके ऊपर आ रही है. Yeah, in Mumbai there is this battle about Juhu Beach. In America there is anti-cult problem. In Germany the police is taking over the property which devotees have and driving devotees out, putting devotees in prison, and it's all coming to Srila Prabhupada. जर्मनी में जो प्रॉपर्टी है वो पुलिस ले रही है और डिवोटीज को जेल में बंद कर रही है. तो मुंबई में जो प्रॉपर्टी है जुहू बीच की, उसकी समस्या चल रही थी. अमेरिका में भी क्या समस्या थी? Anti-cult people, you know, anti-cult people, court cases and so on. Court cases वगैरह. So, at one point, one day was especially difficult, and one problem after another, and then ultimately one telegram came, and Prabhupada, he read this telegram, and it was really something really bad, very bad news. इस तरह से परेशानियों की बौछार चल रही थी. श्री प्रभुपाद का एक टेलीग्राम आया, वो पढ़ने उसको पढ़ने के बाद और ज़्यादा परेशान हो गए. And the secretary which was there with Srila Prabhupada, he was watching Srila Prabhupada. Srila Prabhupada read this telegram, and then he went to his room. उनका सेक्रेटरी था जो वो देखा श्री प्रभुपाद पढ़ने के बाद बहुत विचलित हो गया और अपने रूम में चले गए. And secretary is looking through this keyhole, what Prabhupada is doing there. चाबी लगाने वाले क्षेत्र से वो देख रहा था श्री प्रभुपाद कमरे में क्या कर रहे हैं. That's the job of the secretary too. सेक्रेटरी यही कार्य करते हैं. So, and he says, Prabhupada, what he did, he went to his room, he closed the door, he lay down on the floor, and he started laughing. कमरे के अंदर गए, जमीन पे लेट गए, क्या और हंसने लगे. Hasne lage. And he was laughing and laughing and laughing as if nothing happened. हंसते जा रहे, मानो कुछ नहीं हुआ. This is somebody who doesn't have ahankara. ये उसके लिए संभव है, इसकी बात तो अहंकार नहीं है. If you had ahankara, you would not be able to do this. You would be. अगर आपको अहंकार होता तो आप ऐसे कभी नहीं कर सकते. आप परेशान होते, अपने बारे में सोचते. So, I mean, what I want to say that if you don't have ahankara, it's good for your health. अगर अहंकार नहीं है तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है. Because all the problems, all the physical problems are coming ultimately from my mind. हमारी शारीरिक जितने भी समस्याएं हैं हमारे मन से आती हैं. And all the problems which are coming in my mind are coming from ahankara, from false ego. और मेरे मन में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं वो हमारे मिथ्या अहंकार से आ रही हैं. And then, so it's good for the body if you don't have false understanding. It's good for your mind because there will be no problems and no anxieties. And ultimately, it's good for your soul. तो
ये आपके मन के लिए, आपके शरीर के लिए और आपके आत्मा के लिए, तीनों के लिए अच्छा है कि आप मिथ्या अहंकार नहीं होना चाहिए. Ultimately, this Krishna consciousness is healing us on 3 levels. If we're really Krishna conscious, on a physical level, on a mental level, and on a spiritual level. तो ये कृष्ण भावनामृत में जो हम आए हैं, इसमें हमको 3 प्रकार के लाभ हमको चिकित्सा हो रही है. एक शारीरिक स्तर की, एक मानसिक स्तर की और एक आध्यात्मिक स्तर की. Yeah. Otherwise, we are just sick people. Otherwise, हम बीमार हैं. बीमार है. बहुत बीमारी है. भौतिक स्तर में हम बीमारी है, मानसिक स्तर में हम बीमारी है और आध्यात्मिक स्तर में हम भी बीमारी है. बोलने की जरूरत नहीं. इस प्रकार जो कृष्ण भावनामृत है तो यूनिवर्सल मेडिसिन है, यूनिवर्सल चिकित्सा है. But we should start somewhere, and this understanding is foundational. I am spirit, soul, and nothing belongs to me. ये समझना बहुत जरूरी है कि मैं एक आध्यात्मिक व्यष्टि आत्मा हूँ और ये सब कुछ भी मेरा नहीं. There is only one thing which belongs to me. केवल एक ही चीज है जो मेरी है. And this is God. Bhagavan. So this mamata which we have, this ahanta means I am servant of God and I belong to God. This is the initial understanding which is there. I am servant of God and I belong to God. Yeah, and then on the highest understanding you will have Bhagavan is Bhagavan Mera hai. Bhagavan. Yeah, this mamata is there. So we have to change this, we have to switch this, and this is possible. This is really a switch in our consciousness. If I understand I am just a servant of God and everything belongs to God and I am doing this, then immediately all our problems are solved. Starting with the most important problem, which is calm or lust within our heart. And if we still not be able to solve this problem, it means that something is wrong with our understanding of who I am. I don't understand. I don't have this very strong understanding. फिर भी हमारी समस्या अगर सुलझती नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि हम अभी भी मिथ्या अहंकार में मैं अपना परिचय अभी समझ नहीं पाया हूँ. I guess that's it. Thank you very much.